अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताल नब्दा अल-लुगा अल-अरबिया। इंशाअल्लाह सनतअल्लम फ़ी हाज़ा दर्सी asmaa-ul ishara व फ़ी हाज़ा दर्सी सनस्तअमिलु इस्मुल इशारा लिल क़रीब व हाकज़ा इस्मुल इशारा लिल बईद। Welcome to Arabic and English class. In this lesson we are going to learn demonstrative pronoun. In Arabic language, haza we use for showing near thing and zalika we use for things. So here let's practice some sentences and translate Arabic sentences into English as well as Arabic sentences into Urdu language. Let's start. Hada kitab. This is a book. Dhalika qalam. That is a pen. Hada bayt. This is a house. Dhalika masjid. That is a masjid. Hada bab. This is a door. Dhalika qamis. That is a shirt. Hada miftah. This is a key. Dhalika kursi. That is a chair. Now let's tell the Arabic sentences into Urdu language. Hada kitab. ये बुक है. ज़ालिका कलम. वो पेन है. हादा बैत. ये घर है. ज़ालिका मस्जिद. वो मस्जिद है. हादा बाब. ये दरवाज़ा है. ज़ालिका क़मीस. वो शर्ट है. हादा मिफ्ताह. ये चाबी है. ज़ालिका कुर्सी. वो कुर्सी है. शुक्रन जज़ीलन।